Hello students, today we will study statistics topic measures of correlation. Measures of correlation. Two variables are correlated. If the change in one variable results in a corresponding change in the other variable, then the two variables are said to be correlated. अगर एक वेरिएबल का चेंज दूसरे वेरिएबल के चेंज में रिजल्ट में आता है तो हम उसको क्या बोलते हैं कि टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड हैं. एग्जाम्पल, rise in temperature leads to an increase in the sale of ice creams. अगर गर्मी ज़्यादा हो जाती है तो हमारी सेल आइसक्रीम्स की क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है. कोरिलेशन एनालिसिस is a means for examining such relationships and aims to determine the extent of relationship between two variables if any. कोरिलेशन क्या हेल्प करता है एग्ज़ामिन करने में कि रिलेशनशिप कैसा है और किस एक्सटेंट तक दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है, अगर है तो. ओके, ये क्या होता है, टू वेरिएबल्स आर कोरिलेटेड होते हैं. जैसे राइज इन टेम्परेचर से हमारी क्या होगी, सेल ऑफ आइसक्रीम्स या कोल्ड ड्रिंक्स क्या होती हैं, वो इंक्रीज़ हो जाती है. मीनिंग ऑफ कोरिलेशन. अब कोरिलेशन का मीनिंग क्या होता है. कोरिलेशन इज़ अ स्टैटिक मेजर द डिग्री मेजर्स द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स मूव इन रिलेशन टू ईच अदर. कोरिलेशन एक ऐसा मेज़र है, ऐसा स्टैटिक मेज़र है जो डिग्री बताता है आपको कि जिस डिग्री में, जिस लेवल तक टू वेरिएबल्स एक दूसरे के रिलेशन में होते हैं, वो उस मेज़र को हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशन बोलते हैं. इट मेजर्स द डिग्री टू विच टू वेरिएबल्स मूव टू ईच अदर, मूव इन रिलेशन टू ईच अदर. डिग्री बताता है, मेज़र बताता है. डिग्री मतलब एक्सटेंट बताता है कि किस लेवल तक टू वेरिएबल्स मूव कर सकते हैं, एक दूसरे के रिलेशन में हो सकते हैं. ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्या कहलाता है, कोरिलेशन कहलाता है. नेक्स्ट, इम्पॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस ऑफ कोरिलेशन. अब कोरिलेशन इम्पॉर्टेंट क्यों है. फर्स्ट, कोरिलेशन कोफिशिएंट हेल्प्स इन मेजरिंग द एक्सटेंट ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स इन वन फिगर. एक्सटेंट बताता है, लिमिट बताता है किस लिमिट तक टू वेरिएबल्स के बीच में रिलेशनशिप है. ओके. नेक्स्ट, कोरिलेशन एनालिसिस फैसिलिटेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इकोनॉमिक बिहेवियर एंड हेल्प्स इन लोकेटिंग द क्रिटिकली इम्पॉर्टेंट वेरिएबल्स ऑन विच अदर्स डिपेंड. जो क्रिटिकली इकोनॉमिक बिहेवियर होते हैं, जिनको हम जज नहीं कर सकते, वो उसको जज करने के लिए हम कोरिलेशन की हेल्प लेते हैं. वो हमको बताता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर कैसे डिपेंडेंट है, किस एक्सटेंट तक, किस डिग्री तक डिपेंडेंट है. थर्ड, कोरिलेशन फैसिलिटेट्स द डिसीजन मेकिंग इन द बिजनेस वर्ल्ड. ये हमको डिसीजन लेने में भी हेल्प करता है कि कौन सा वेरिएबल किससे रिलेटेड है बिजनेस मार्केट में. It reduces the range of uncertainty as predictions based on correlation are likely to be more reliable and near to reality. Okay. Next topic है types of correlation. Correlation कितने types के होते हैं. First, positive correlation. When two variables move in the same direction. जब टू वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, या तो वो दोनों इंक्रीज़ कर रहे होते हैं या वो दोनों क्या डिक्रीज़ कर रहे होते हैं. जैसे रिलेशनशिप बिटवीन हाइट एंड वेट. ओके. सेकंड वन, नेगेटिव कोरिलेशन. व्हेन टू वेरिएबल्स मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन. या एक वेरिएबल इंक्रीज़ करेगा तो दूसरा वेरिएबल डिक्रीज़ करेगा. जैसे रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड. प्राइस एंड डिमांड का रिलेशनशिप हमने डिमांड वाले फंक्शन में, डिमांड वाले चैप्टर में पढ़ा था ना, कि क्या रिलेशन होता है उनका, इन्वर्स रिलेशन होता है. तो वो नेगेटिव कोरिलेशन में आ जाता है. ओके. नेक्स्ट वन इज लीनियर कोरिलेशन.
there exists a linear correlation if the ratio of change in the two variables is constant. हम जब टू वेरिएबल्स लेते हैं तो उनकी जो रेशो ऑफ चेंज है एक वेरिएबल से एक से दूसरे पे जाने के लिए वो क्या हो, हमारा रेशो कांस्टेंट हो. जैसे यहाँ पे x 10 20 ये 10 से बढ़ रहा है ना, ऐसे ही y में 5 10 15 ये 5 की लिमिट से बढ़ रहा है. तो इसमें क्या है, हमारी रेशो कांस्टेंट हो गई है कि x वाले वेरिएबल्स 10 से इंक्रीज हो रहे हैं, y वाले वेरिएबल्स 5 से इंक्रीज हो रहे हैं. ओके. फोर्थ इज नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन. There exists a curvilinear correlation if the change in the variable is not constant. कांस्टेंट नहीं होता, कोई किसी भी रेशो से बढ़ सकता है. जैसे x में 10 20 30 40 ये 10 की रेशो से इंक्रीज हो रही है, बट y में देखो 5 7 12 20 5 7 का डिफरेंस कुछ और है, 7 से 12 का डिफरेंस कुछ और है, 12 से 20 का डिफरेंस कुछ और है. तो ये क्या है, रेशो इनकी कांस्टेंट नहीं है, इसलिए हम इनको बोलते हैं नॉन लीनियर या कर्वीलीनियर कोरिलेशन. और लीनियर कोरिलेशन क्या होता है, जहाँ पे x एंड y वेरिएबल्स की जो रेशो वो कांस्टेंट हो. x भी 10 की रेशो से बढ़ रहा है और y एक कांस्टेंट रेशो यानी कि 5 से रेशो से इंक्रीज हो रहा है. ओके. नाउ नेक्स्ट लास्ट 3 टाइप्स. सिंपल कोरिलेशन व्हेन ओनली 2 वेरिएबल्स आर स्टडीड. जब हम 2 वेरिएबल्स को ही स्टडी करते हैं तो वो हमारे हो जाते हैं सिंपल कोरिलेशन. जैसे रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एक्सपेंडिचर, तो इसमें 2 वेरिएबल्स हुए, इनकम एंड एक्सपेंडिचर. सेकेंड, मल्टीपल कोरिलेशन व्हेन रिलेशनशिप अमंग 3 और मोर देन 3 वेरिएबल्स इज स्टडीड. जब हम 3 या मोर देन 3 वेरिएबल्स को स्टडी करते हैं, जैसे रिलेशनशिप ऑफ वीट आउटपुट विथ फर्टिलाइजर्स एंड रेनफॉल. हमने वीट का आउटपुट किसके रिलेशन में पढ़ा, फर्टिलाइज़र क्या लगाए और रेनफॉल कैसा था, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स इंक्लूड हो गए. पार्शियल कोरिलेशन व्हेन रिलेशनशिप बिटवीन 2 वेरिएबल्स इज एग्जामिन्ड कीपिंग अदर वेरिएबल्स एज कांस्टेंट. एग्जाम्पल ऑफ पार्शियल कोरिलेशन. प्रोडक्शन ऑफ व्हीट डिपेंड्स ऑन many factors like rainfall, quality of seeds, manure, etc. If we study the relation between production of wheat and quality of seeds, keeping rainfall and manure constant, तो ये relation क्या हो जाएगा, partial relation हो जाएगा. Okay students, now next is degree of correlation. कोरिलेशन की डिग्रीज होती हैं. परफेक्ट कोरिलेशन में +1 -1. वेरी हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन +0.9 -0.9. फेयरली हाई डिग्री ऑफ कोरिलेशन बिटवीन +0.75 एंड +0.9. बिटवीन -0.75 and -0.9. Moderate degree of correlation between +0.5 and +0.75. Between -0.5 and -0.75. Low degree of correlation between +0.25 and +0.5. Between -0.25 and -0.5. Very low degree of correlation between 0 and +0.25. Between 0 and -0.25 and no correlation में 0. Okay students. Now next is methods of measurement of correlation. There are 3 methods to measure correlation. First is scatter diagram. Second is Karl-Pearson's coefficient of correlation. Third is Spearman's rank correlation method. 3 methods हैं जिनकी हेल्प से आप correlation को measure कर सकते हो. फर्स्ट स्कैटर डायग्राम हो गया, सेकंड कार्ल-पियर्सन, थर्ड स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन. अब आपकी सिलेबस में चेंज हुआ है, इसलिए जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन मेथड है
वो आपके सिलेबस में अब नहीं है. ओके, सो merits and demerits of scatter diagram. First is simplicity. It is a simple and a non-mathematical method of studying correlation between two variables. Second, easily understandable. It can be easily understood and interpreted. It enables us to know the presence or absence of correlation at a single glance of the diagram. Third, not affected by extreme items. It is not influenced by the size of extreme values, whereas most of the mathematical methods lack this quality. Fourth, first step. It is the first step in investigating the relationship between two variables. Now, demerits. Non-mathematical method. This method does not indicate the exact numerical value of the correlation which is possible by other mathematical methods of correlation. Rough measure. It gives only a broad and rough idea of the degree and nature of correlation between two variables. Thus, it is only a qualitative expression rather than a quantitative expression. Third, unsuitable for large observations. It is not possible to draw a scatter diagram on a graph paper in case of more than two variables. So these are the merits and demerits of scatter diagram. Our first method is Karl Pearson coefficient of correlation. Karl Pearson was the first person to give a mathematical formula for measuring the degree of relationship between two variables in 1890. ये फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने कोरिलेशन का मेथड दिया, डिग्री बताई, मेजर कैसे कर सकते हैं रिलेशनशिप बिटवीन टू वेरिएबल्स को, और इनके जितने भी फॉर्मूलेज होते हैं उनको डिनोट करते हैं हम स्मॉल आर से, और जो इनके कोरिलेशन मेथड की वैल्यूज़ आती हैं वो लाई करती हैं ऑलवेज +1 एंड -1 के बिटवीन में, बिटवीन +1 एंड -1. Karl Pearson coefficient correlation is also known as product movement correlation और simple correlation coefficient. इनके मेथड को हम product method correlation या simple correlation coefficient भी कह सकते हैं. It is the most popular and widely used method to calculate the correlation coefficient. Okay, students? Now there are 4 methods of finding Karl Pearson coefficient of correlation. First is actual mean method. Second, direct method. Third is shortcut या assumed mean या indirect method. Fourth is step deviation method. These are the 4 methods by which we can find Karl Pearson coefficient of correlation. Okay, students? I have given one examples of all these methods in my PPT. So go through the PPT for all these method examples. Okay, students? Assumptions of coefficient of correlation. First, linear relationship. In this method, it is assumed that there is a linear relationship between the variables, that is, if the paired observations of both the variables are plotted on a scatter diagram, the plotted points will form a straight line. Second, causal relationship. There is no cause and effect relationship between the two variables under study. However, there exists a cause and effect relationship between the forces affecting the two variables. Correlation is meaningless if there is no such relationship. Third, normal distribution. The two variables under study are affected by a large number of independent causes of such a nature as to produce normal distribution.
variables such as height, weight, color of skin, commodity prices, demand, supply, etc. are affected by a multiplicity of forces. Fourth is error of measurement. The coefficient of correlation is more reliable if the error of measurement is reduced to the minimum. All these four are assumptions of coefficient of correlation. First is linear relationship, second causal relationship, third normal distribution, and the fourth one is error of measurement. Okay students? Now properties of coefficient of correlation. First, coefficient of correlation lies between -1 and +1. This property of correlation will also serve as a useful check on the correctness of our calculations. If the calculated value of R lies outside these limits, then there is an error in the calculations. कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन लाई करता है बिटवीन -1 एंड +1 के. अगर आपका आंसर -1 एंड +1 से बाहर की रेंज में आता है तो आपको पता लग जाएगा कि आपने कैलकुलेशन रॉन्ग की है. द कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द चेंज ऑफ ओरिजिन एंड स्केल ऑफ मेजरमेंट्स. ओके. थर्ड इज कोफिशेंट ऑफ कोरिलेशन of the linear relationship. R is positive when both the variables increase or decrease together. R is negative when value of one variable increase as values of other decrease and vice versa. Next is merits and demerits. Merits, popular method. It is the most popular and most widely used mathematical method of studying correlation between two variables. Second, degree and direction of correlation. The correlation coefficient summarizes in one figure not only the degree of correlation but also the direction, that is whether correlation is positive or negative. Demerits, affected by extreme values. The values of correlation are unduly affected by the value of extreme items. Second, time consuming method. As compared to other methods, it is the most time consuming. Third, possibility of wrong interpretation. One has to be very careful in interpreting the value of the coefficient of correlation, as very often the coefficient is misinterpreted. Now I have covered the almost theory portion. Now for practical part, just go through the notes of the four methods of Karl Pearson coefficient correlation. Okay students?